Hi friends, this is Real Fitness. So today our day one, which is we're going to start our Real Fitness. So today we'll start with the warm up, stretches and back extension workout, which is to correct your posture. Actually, fitness is like it's on four pillars, which is first to boost your heart rate, improve your lung capacity, which is with the warm up, cardiovascular, cardio or cycling or treadmill or ellipticals, or you can start with jumping exercise. That is a warm up. Stretches, we need to stretch from top to bottom your overall body. And third, which is for your extension, which is you go with the floor exercise or deadlift. So let's start with the Real Fitness with the cardio. So we'll start with the cardio. So you need to start with a low speed for the warm up, which is you can start with the 3.3 or 3.5 speed, and slowly you can keep increasing your speed. So let's start with the warm up. Please come. Can you start? Alright, so we'll start with the 3.3 speed for the warm up, and just how the time goes on, which is फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसा आपका टाइम बढ़ते जाएगा आपने अपना स्पीड बढ़ाते जाना है, विच इज देन 4.5 then 5 then 5.8 9 10 is depend on your lung capacity and depend on the body types. It's not necessary for all of them, which is like there's a three body types: ectomorph, endomorph and mesomorph. If there's an endomorph, means a fat guy, he's supposed to start with the slow speed, which is like 3.3, then 3.5, then 3.7, 3.9 and then forward. But if there is a good fitness guy, which is the mesomorph, so he can start with the low speed 3.5 and then straight away 5.5. He can constance, he can run for the 10 minutes, or he can shoot up around 8 or 9.5 speed. Okay friends, so we finished with the warm up. So we'll switch to the stretches. तो स्ट्रेचेस हम लोग को टॉप टू बॉटम करना है, और उसके साथ साथ मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से टॉप टू बॉटम स्ट्रेचेस कर रहा है. सो लेट्स गो फॉर द स्ट्रेचेस. सो विल शो यू द डेमो, विच इज विल स्टार्ट विद द टॉप टू बॉटम. सो विल स्टार्ट विद द नेक स्ट्रेच फर्स्ट. सो कीप योर हैंड ऑन योर वेस्ट लाइन, योर फीट डिस्टेंस शोल्डर विथ, या स्ट्रेच योर jaw line and keep stretching on your neck, overhead extension, then change down, square your shoulder, press your chin down and keep stretching down, so you feel your backward necks. So change the sideways, side neck, yeah, try and touch your shoulder, change the other side, right, and change with the chin stretch. Yes, try and touch your jawline on your shoulder, right? Okay, change the side. And always remember, we need to go with the stretches and rotations. So let's start with the rotation now. 10 with the clockwise, 10 anti-clockwise. Change, other side. So हम लोग हर जॉइंट्स का हम लोग स्ट्रेच करेंगे और उसको रोटेशन भी करेंगे, ठीक है. सो लेट्स चेंज विद द जॉइंट. स्टार्ट विद द शोल्डर नाउ. यस, सेम हैंड, सेम शोल्डर, होल्ड इट एंड स्ट्रेच बैकवर्ड्स. दिस इज फॉर योर पोस्टीरियर डेल्ट स्ट्रेच. चेंज नाउ anterior, the other hand, and then change for the anterior one. Stretch your arm and stretch your reach, flex side and keep stretching your posterior head with the anterior muscles. That's called anterior delt, right? Now change. Now stretch with the forearms now. Yes, get it down. This is for your forearms, your arms, and bit for your posterior head. Yes, again, forearms, arms and posterior head. Yeah. Now this is for your brachialis muscle.
which is this. This is called the brachial muscles. So stretching on the brachial muscle, which is you change the angle. First was the this, second was the this. Now the third one. This is for your wrist stretch. Good one. Change. The other hand. All right. For the wrist. All right. Change. Now we stretch the elbow joint. We stretch the shoulder joint, elbow joint, and wrist joint. So we'll go with the all three rotations now. Go with the shoulder rotation. 10-10. Clockwise, anti-clockwise. Yeah, change. Yes, keep your arms straight and keep rotating. Yeah. Now change. This is for your trapezius and the posterior head stretch. This is for your delt. This is 20 count. Okay, change. Keep your hand sideways, elbow soft, square your shoulder, chin up, and keep twisting now. This is for your low back. This is 20 count. Alright, change now. Now elbow joint. Elbow joint, which is for your tennis elbow and your elbow joint flexibility. And rotation. Clockwise, anti-clockwise. Okay, change. Now wrist rotation. You remember we did all shoulder, elbow and wrist first stretches. So we are doing all rotations now after stretches. Alright. Now let's again your hand on your waistline, feet distance shoulder width, square your shoulder, bend down, upper body parallel to floor. Chin up. Keep bending down till your upper torso, which is your upper body, we call upper body parallel to floor. Yeah, keep your knee locked. This stretch mother rule, which is you have to keep your knee straight, which is knee lock. Then only you feel your hamstring, your glutes, your calves, and your low back too. Okay, come back. Now just keep your knee soft, feet distance shoulder width, round your back, square your shoulder, and keep stretching your spinal cord. Keep rounding your spinal cord. Alright, come back, easy. Again, knee straight and keep rotating your hip joint. This is a hip rotation. Alright, change now. Cross your legs. So we are stretching your glutes and your hip joint with the coming down, upper body parallel to floor, and just keep turning the same leg which is your cross, that side you need to cross. You need to keep crossing your upper torso. You need to turn on cross leg side. जिस तरफ आपने leg cross करा हुआ है उसी तरफ आपको turn करना है. So you get a good glute stretch and your hip joint stretch. Alright, now let's stretch your inner thigh and your ALTs, which is feet distance wider than shoulder but pointed, and keep sitting down, which is like how you sit on chair. Just sit back. When you're sitting down, remember keep your shin bone perpendicular to the floor, right? And just keep sitting back. And this side you're sitting it, that knee bend, and the other leg which is has to be very much locked straight. That's the mother rule. Alright, change. Now we'll stretch for the quadriceps and hamstrings and your calves. So turn, keep the distance, keep more distance. Yes. And the other leg, the backward leg, which is has to be very straight, knee lock, and remember your heel has to be rest on ground. That's the mother rule. And keep crossing your toes. Yes. Change. पीछे वाला पैर सीधा होना चाहिए, आगे वाला पैर बेंड करना है, उसको कोशिश करना है कि उसको अपने टो से आगे ले जाना है. So you get a good quadricep stretch, hamstring stretch, and glute stretch. Even calves too. So let's rotation with the knee joint rotation. This is very important rotation, which is for your patella. You need to understand your knee cracking, or it's hurting, or it's paining. So let's switch to the last rotation, which is for your ankle rotation. Again, clockwise and anti-clockwise. Both the legs.
So this is your stretches, which is we finished with the stretches. So we are switching to the back extension, which is for your correct posture. So we need to work on your posture for all, for men, women, old age, or kids, for everyone. So let's switch to the back extensions. If you don't have bench, you can lie down on the floor. So let's start on bench first. So rest your chin, yeah. So we'll start with the first variation, which is for the extension. So dynamic position on front, and let's start with the extension first. Your upper torso. Sorry, मतलब वापस आपके हाथ सामने लेने हैं और आपको डायनामिक हाथ करके आपको अपना अपर बॉडी रेज करना है. लेकिन जब आप पीछे जाते हो, स्क्वायर योर शोल्डर एंड रेज योर आर्म बैकवर्ड्स एंड जस्ट स्ट्रेच योर अपर बॉडी. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्सटेंशन. दिस इज फॉर योर अपर टोर्सो. ये एक्चुअली आपके ऊपर वाले अपर बैक के लिए ये एक्सटेंशन है, राइट. दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन. सो लेट्स स्विच टू द सेकंड वेरिएशन, व्हिच इज फॉर योर लोअर बॉडी, लोअर टोर्सो. सो फीट डिस्टेंस, शोल्डर विड्थ, योर फीट फ्लेक्स मतलब आपको टोज अंदर खींच के रखने हैं एंड जस्ट स्ट्रेट लिफ्ट अप. यहाँ पे इसका मतलब है आप आपके घुटने आप बेंड नहीं कर सकते, आपको सीधे लिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ योर लो बैक. तो आपका लो बैक का यूज करना है. जस्ट एक्सटेंड योर लेग्स, स्ट्रेटन अप. सो दिस इज यू फील योर लो बैक एंड ट्राई एंड डोंट मूव योर अपर बॉडी. योर अपर बॉडी हैज टू बी रेस्ट. Chin rest, it means your upper body rest. So you need to tackle with your only lower torso. Lower torso ही आपको raise करना है ऊपर नीचे. Upper body हिलाना नहीं है. Okay, let's switch to the third variation now. This is to again back extension, which is for your spinal cord, to strengthen your spinal cord, to strengthen your back. So let's take a hand on bench, yeah. और सीधा करते जाते जाते आपको extend करना है. Go and straight your elbow joint and keep your elbow close to your upper torso. और जब नीचे आते हो तो आपका मत्था आपको नीचे बेंच की तरफ करना है. अगर आप जमीन पे लेटे हो तो जमीन पे टच करना है और एल्बो बहुत नजदीक रखने अपने अपर टोर्सो से, राइट. एंड कीप रेंजिंग अपर बॉडी एंड ट्राई एंड राउंड योर बैक प्रॉपर्ली. दिस इज हेल्प योर स्पाइनल कॉर्ड टू स्ट्रेंथन अप एंड improve your posture day by day. Okay friends, so we just finished with the extension. जो अपने बैक एक्सटेंशन मतलब अपना पोस्चर करेक्ट करने के लिए था, वो सभी को ज़रूरी है, मेल फीमेल किड्स ओल्ड एज सभी के लिए. तो ये एक बैक एक्सटेंशन है. और अगर आप गुड इनफ फिटनेस लेवल में हो, मतलब मीजोमॉर्फ, जैसे मैंने बोला था 3 बॉडी टाइप्स रहता है, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ. सो एक्टो मतलब दुबला पतला जिसका शोल्डर और उसका कमर एक लाइन में, तो उसको एक्टोमॉर्फ बोलते हैं. और एंडोमॉर्फ मतलब जिसकी कमर अपने शोल्डर से बड़ी होती है उसको एंडोमॉर्फ बोलते हैं, जिसे हम लोग फैट्स बोलते हैं, फैट गाय, तो फैट होता है. और मीजोमॉर्फ मतलब जिसके शोल्डर अपने कमर से ज़्यादा होता है, वो मीजोमॉर्फ होता है. सो ये बैक एक्सटेंशन सब बॉडी टाइप्स के लिए था. एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ सारे बायो टाइप्स इस एक्सटेंशन को कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको बॉडी ये अगर एक्सटेंशन नहीं करना है, या फिर आप अच्छे खासे फिटनेस इसमें हो, जैसे आप मीजोमॉर्फ हो, गुड इनफ फिटनेस और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो, आपका पोस्चर भी सही हो, तो आप सीधा स्टिफ लेग डेडलिफ्ट से शुरू कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टिफ लेग डेडलिफ्ट. अगेन देयर इज अ 3 डेडलिफ्ट, which is first the stiff leg deadlift, second the clean deadlift, and third which is the sumo deadlift. So we'll try all 3. Okay, let's start with the stiff leg deadlift first, because as I said there's a 3 types of deadlift. So we'll start with the stiff leg deadlift first. So this is the stiff leg deadlift. Keep your knees straight, lock, and travel your dumbbell close to your shin bone, close to your quadriceps and your shin bone. Keep your knees straight, come back, going down. Your grip supposed to be the prone. Again there's a 3 grips. There's a prone, neutral and supine. So you need to maintain the prone grip. आपको grip काफी नजदीक रखना है, और जब आप प्रोन ग्रिप से नीचे जाते हो तो आपको स्ट्रेच करना है हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काफ्स और लो बैक. और जब पीछे आते हो तो यू नीड टू कन्वर्ट योर प्रोन ग्रिप इनटू न्यूट्रल ग्रिप एंड स्क्वीज योर बैक हार्डर, स्क्वेयर योर शोल्डर एंड स्लांट इट बैक. So you can compress your low back, right? So let's switch to the clean deadlift now.
So clean deadlift, which is again the same position, stance, shoulder width, your knee soft. Again, keep the prone grip. Sit down, elbow soft. Sitting down, bend your knee, touch your feet, come back, squeeze it back. Again, slant it back. Again, you compress your low back and your spinal cord, which is with your back and upper back, both. And again, I just want to remind you, तो जो हमने तीनों एक्सटेंशन करे थे लेट के, उन सारे एक्सटेंशंस की काउंट्स 20 काउंट है. जब डेडलिफ्ट करते हो तभी भी 20 काउंट ही करने हैं. बैक एक्सटेंशन करोगे जो तीनों वेरिएशन, उसके भी 20 काउंट ही करने हैं. So let's switch to the sumo deadlift now. This is the third deadlift, which is actually this is for the women's, not for the male. But if you are a very endurance person, you are a very experienced person, then only you try the sumo deadlift. Yeah, again, sumo, it means your feet distance widening shoulder and your feet outwards, your knee drop with your feet, go down, sit down with the help of your knee, coming up, again extend your shoulder and squeeze the upper back and slant it back. This is a sumo deadlift. And all three variations 20 count. So friends and family and guys, so we finish with the warm up, stretches and extension. So this is a recap for you all. For beginning, sorry वापस बहुत सारा इंग्लिश हो रहा है, so हम हिंदी पे भी आते हैं. तो 10 मिनट आपको पहले वार्म अप करना है. It's depend on the body type, which is ectomorph, endomorph, mesomorph. अगर आपका fitness level अच्छा है, so you can start with the 3.5 speed and you can shoot up the heart rate till 165, 70, 75. But if you're endomorph, you can't go beyond 160 heart rate. So you have to be very careful, but keep improving because you're warming up. So that's why you need to improve your speed, which is like you start with the 3.5 speed and just keep going on and on, which is like till it's on your heart rate and your lung capacity. हाँ, तो वापस फिर से वापस ज़्यादा इंग्लिश हो रहा है तो थोड़ा सा हिंदी में आ जाते हैं. तो आपका हार्ट रेट आपको जितना अलाउ करता है उतना आप उसको पुल करें, क्योंकि ये वार्म अप है. इसके लिए इसको 10 मिनट में आपको हार्ट रेट 165 के ऊपर आप ले जा सकते हो. इट्स अलाउड. सो जितना आप हार्ट रेट ऊपर करोगे उतना ज़्यादा कैलोरी बर्नआउट होगा. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू पुल योर हार्ट रेट एज मच एज पॉसिबल, which is your depend on your body types. If you're ectomorph, so you can pull as much as possible 9.5 speed. If you're endomorph, you can pull as much like 6.5, not more than that. But if you're mesomorph, you can pull like 12.5 speed also. But here there is no heart rate barricades, which is you can pull accordingly your endurance, your body types or your capability. If your capability is damn good, so you can pull as much as possible, which is I'll pull 180, 82. So it's depend person to person. So it's on you. So you can pull that much. वापस ज़्यादा हो रहा है इंग्लिश, so जब हम वापस हिंदी में आते हैं तो 10 मिनट का आपका वार्म अप होता है जो हर बॉडी टाइप्स को करना होता है. उसके बाद आपको स्ट्रेचेस करने होते हैं. वो स्ट्रेचेस के लिए आपको 5 to 7 मिनट्स मिलते हैं. उसमें आपको जो भी हमने आज आपको दिखाया जो डेमो के साथ टॉप टू बॉटम आपको सारा बॉडी टाइप्स जितना भी है बॉडी टाइप्स उनको सबको स्ट्रेचेस करने होते हैं. जो टॉप टू बॉटम होगा मतलब हर जॉइंट्स का आपको स्ट्रेचेस करना है और रोटेशन करना है. और हर आपके जॉइंट्स का 20 रोटेशन होगा और स्ट्रेचेस भी होगा. पहले स्ट्रेच होगा उसके बाद में रोटेशन होगा. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा. 10-10 काउंट होंगे. सो 20 काउंट आपको करने ही करना है. उसके बाद आपको बैक एक्सटेंशन करना है. बैक एक्सटेंशन में आपको बैक एक्सटेंशन में एक तो आप फ्लोर पे कर सकते हो. इस डिपेंड ऑन जो भी आपके पास अवेलेबल है. अगर बेंच है तो बेंच पे कर लीजिएगा या फिर फ्लोर है तो फ्लोर पे कर लीजिएगा. और वो नहीं अगर आपके पास अच्छा खासा जिम है तो आप एक तो रॉड से डेडलिफ्ट कर लीजिएगा या फिर डंबल से डेडलिफ्ट कर लीजिएगा. और डेडलिफ्ट का भी हम लोगों ने 3 बॉडी टाइप्स किया हुआ है. उसमें हमने एक स्टीफ लेग डेडलिफ्ट किया, एक हमने क्लीन डेडलिफ्ट किया और एक हमने सुमो डेडलिफ्ट किया. ये आप अगर आप अच्छे खासे जिमिंग कर रहे हो, आप काफ़ी फिटनेस में काफ़ी टाइम से आप एक्टिव हो तो आप डेडलिफ्ट के साथ जा सकते हो. और अगर आप बिगिनर्स हो तो आई सजेस्ट गो विद द बैक एक्सटेंशन, विच इज़ डेफिनेटली वी नीड टू इम्प्रूव योर पोस्चर फर्स्ट. You need to improve your fitness level first because your fitness level is on your endurance, which is the warm up and running and all stuff. Second, which is on your flexibility. Third, which is on your posture. And fifth, your workout, which is your goal. What you decide, you want to burn out your calories, you want to gain your muscle, you want to improve your posture, you want to improve your heart rate, you want to improve your lung capacity. It's depend on that. So it's all
डिपेंड ऑन ऑल डिफरेंट बॉडी टाइप्स विच इज़ वी ऑलरेडी डिस्कस। तो वापस ज़्यादा इंग्लिश हो रहा है तो हम वापस हिंदी में आते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो हम लोग को काफ़ी कुछ अभी मिल चुका है। सो लेट्स सी यू नेक्स्ट वीडियो विद द डे 1। Oh guys, so like, share, subscribe and hit the button.